Hello everyone, welcome back to this platform. In this video series, we will be exploring the Botany entrance exam question and their solutions in detail. It will be helpful for various entrance exams which are related to Botany. By the end of this video series, you will have a better understanding of these topics related to this questionnaire. I will be covering this questionnaire in 10 to 20 parts so that the content becomes precise and understandable easily. In this part, I will be covering the microbes part. So let's dive in. The first question is viruses infecting bacteria are known as. ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उन्हें कहा जाता है TMV, टोबैको मोजाइक वायरस, रिग्रेस्ड पैरासाइट्स, बैक्टीरियोफेजेस और प्रोवायरसेस. तो इसका जो सही आंसर है दैट इज बैक्टीरियोफेज. ऐसे वायरसेस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उन्हें कहा जाता है बैक्टीरियोफेजेस. I will be discussing these all options in detail. Firstly, TMV. TMV is tobacco mosaic virus. This is diagram of TMV. It consists of outer proteinaceous covering जिसे कहा जाता है capsid, and the inner genetic material which is a single stranded RNA which is a helical, and the subunits of this capsid, these are known as capsomeres. इसे कहा जाता है capsomere. और ये जो वायरस है it is known to cause a disease which is known as tobacco mosaic virus. ऐसा नहीं है कि सिर्फ टोबैको पे ही ये डिजीज़ कॉज करता है. इट कॉजेज डिजीज इन वेरियस मेंबर्स ऑफ फैमिली सोएनेसी. और इसके जो सिम्टम्स हैं दे अपीयर इन द फॉर्म ऑफ मोटल लीफ, डिकलरेशन ऑफ लीफ, मोजाइक पैटर्न ऑन लीफ. सो TMV बिलोंग्स टू जीनस टोबैमो वायरस जो कॉज करता है डिजीज़ इन सोएनेसी, मेंबर ऑफ सोएनेसी. सबसे पहले इसे डिस्कवर किया गया था एडोल्फ मेयर के द्वारा. ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू रिपोर्ट दिस TMV. इन्होंने सबसे पहले रिपोर्ट किया था TMV को. देन दिमित्री इवानोस्की, ही वॉज अ रशियन साइंटिस्ट जिन्होंने स्टडी किया इस वायरस को, और ही फाउंड दैट दीज वायरसेस कैन पास थ्रू बैक्टीरियल फिल्टर. देन दिस स्टडी वॉज फर्दर continued by one person named as M. बेजरिंग. और इन्होंने एक फेमस स्टेटमेंट दी थी दैट इज कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम. Contagium vivum fluidum, which means a viable fluid that can cause disease. So tobacco plant का जो filtrate है that contain these viruses particle and that can cause disease in the fresh healthy plants. And the term was coined by Dmitry Ivanovsky, this TMV, then the scientist named as Stanley in 1935. Stanley ने 1935 में सबसे पहले isolate किया है TMV को और crystallize किया है. was American scientist. If we talk about its morphology, so this virus is rod-like in appearance. और इसका जो लेंथ होती है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 300 नैनोमीटर लॉन्ग, डायमीटर ऑफ 80 नैनोमीटर, एंड इट इज़ कवर्ड बाय प्रोटीन शेल विच इज़ नोन एज कैप्सिड. इसकी कवरिंग को कहा था कैप्सिड, और ये कवर करता है इसका जेनेटिक मटेरियल विच इज़ द सिंगल स्टैंडर्ड RNA मॉलिक्यूल. और इसमें जो कैप्सिड होता है दैट इज़ मेड अप ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 2130 मॉलिक्यूल्स ऑफ कोर प्रोटीन. तो इतने इसमें कैप्सोमियर्स प्रेजेंट होते हैं, हेलिकली अरेंज्ड होते हैं वो. और इसका जो एक टर्न होता है दैट पोजेसेस 16.3 प्रोटीन्स पर हेलिक्स, एंड दिस RNA इज फाउंड इन अ coiled manner inside the capsid coat which is made up of approximately 6,395 न्यूक्लियोटाइड्स. तो इतने न्यूक्लियोटाइड से ये जेनेटिक मटेरियल इसका बना होता है. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस TMV. नेक्स्ट इज रिग्रेस्ड पैरासाइट्स. जो रिग्रेस्ड पैरासाइट्स होते हैं, दिस इज द टर्म, दिस रिग्रेशन टर्म इज refer to the decrease in the severity of symptoms of a number of parasites present in the host. With the passage of time जो host है वो develop करता है immunity, जिसके कारण जो parasites हैं वो अपने बहुत ज़्यादा symptoms show नहीं कर पाते हैं host की body में. तो उस condition को कहा जाता है regression. तो regressed parasite means जिनके symptoms clearly दिखते नहीं हैं host की body में. This might occur naturally as the host immune system fights off infection, or might be the result of treatment with medications or other interventions. तो इसके कारण जो होस्ट की बॉडी है उसमें उस पैरासाइट के सिम्टम्स क्लियरली विजिबल नहीं होते हैं. इन दिस सेंस रिग्रेशन इज यूज्ड टू डिस्क्राइब पॉजिटिव आउटकम
इन द कोर्स ऑफ पैरासिटिक इन्फेक्शन. सो ऐसे वायरसेस, ऐसे पैरासाइट्स को हम रिग्रेस्ड पैरासाइट कहते हैं. Then the next thing, which is the answer of this question, that is बैक्टीरियोफेज. तो बैक्टीरियोफेज होते हैं ऐसे वायरसेस जो इन्फेक्ट करते हैं बैक्टीरिया को. तो ये जो बैक्टीरियोफेज है, इट इज़ अ वायरस विच कंटेन्स अ हेड, अ नेक रीजन एंड अ टेल. इसलिए इसे हम टी बैक्टीरियोफेज भी कहते हैं. हेयर टी स्टैंड्स फॉर टेल रीजन. सो इट कंसिस्ट ऑफ दिस कैप्सिड हेड, और इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, दैट इज डीएनए, double stranded DNA. Then collar sheath होती है, that is made up of protein. Then it contains base plate, spikes, tail fibers जो attachment में help करते हैं on the bacterial surface. If we talk about its discovery, तो bacteriophages को discover किया गया था scientists के द्वारा जिनका नाम है Frederick Dwart. And the term bacteriophage, जो term है, that term was coined by Felix D. Harrele in early 20th century. Then there were another scientist named as Knoll and Ruska. इन दो scientists को credit जाता है for the discovery of electron microscope. तो electron microscope का जो discovery है, that was done by these two scientists. Then last option is the provirus. This provirus is a term which is used for a host cell which contained the genetic material along with the integrated portion of viral DNA. तो ऐसा DNA जिसमें बैक्टीरिया का DNA भी अटैच होता है, इंटीग्रेटेड होता है इनसाइड द, सपोज दिस इज अ बैक्टीरियल सेल. और ये नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोटीन कोड ऑफ अ वायरस एनक्लोजिंग न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड. जो वायरस का प्रोटीन कोड होता है जो कवर करता है न्यूक्लिक एसिड को, उसके लिए क्या टर्म यूज़ की जाती है? आवर ऑप्शंस आर वेक्टर, कैप्सिड, प्रोफेज और ब्लिफेरोप्लास्ट. So I have already discussed this. The right answer of this question is capsid. इसे कहा जाता है कैप्सिड, जो प्रोटीनिशियस कवरिंग होती है जो न्यूक्लिक एसिड को कवर करता है. फर्स्टली आई विल डिस्कस अबाउट द वेक्टर. वेक्टर होता है कोई भी ऐसा व्हीकल जो ट्रांसफ़र करता है किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह के लिए. सो अ वेक्टर इज़ वन दैट ट्रांसफर्स from one location to another, assist with some biological process. For example, we have pollination vector, immunological vectors, molecular biology में vectors use करते हैं. Like we have this plasmid. The most commonly used plasmid is PBR322. So this is the extra chromosomal DNA which is present in some bacteria, जिसे हम as a vector use करते हैं, जिसमें हम desired fragment of DNA को insert करते हैं and becomes recombinant DNA, और उसे हम use करते हैं किसी होस्ट के अंदर ट्रांसफर करने के लिए. सो दिस इज नोन एज वेक्टर. द नेक्स्ट इज द करेक्ट आंसर, दैट इज कैप्सिड. वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरसेस ऑन द बेसिस ऑफ इट्स शेप, सिमेट्री. लाइक वी हैव हेलिकल वायरस, एग्जांपल इज टोबैको मोजाइक वायरस. देन पॉलीहेड्रल हैविंग मैनी साइड्स, एडिनोवायरस. देन स्फेरिकल वायरस, दैट इज इन्फ्लुएंजा वायरस. देन कॉम्प्लेक्स सिमेट्री इज ऑफ दिस बैक्टीरियोफेज. सो दिस outermost proteinaceous covering is known as capsid. इसे ही capsid कहा जाता है, and this is the right answer. Next is the prophage. Prophage is the term which is used for integrated DNA, which is formed by the combination of viral DNA and the host DNA. जब host का DNA और जो वायरस का DNA इंटीग्रेट होकर एक ही स्ट्रक्चर बनाते हैं, that structure is known as prophage. उसे कहा जाता है prophage. We have some examples of prophages, like we have some bacterial pathogen that contain prophages include bacterium that causes diphtheria, जिसे हम whooping cough भी कहते हैं. It is caused by Corynebacterium diphtheriae, and bacterium that causes cholera, Vibrio cholerae. तो ये जो bacterias हैं इनमें prophages present होते हैं. Next is blepharoplasts. So ये जो blepharoplasts होते हैं, these are the structure which are present in those cells like which forms cilia or flagella. So ये जो blepharoplasts होते हैं specialized structure हैं जो मोस्टली कुछ सेल्स में पाया जाता है, पर्टिकुलरली इन द सेल ऑफ एल्गी एंड प्रोटोजोआ. और जो टर्म ब्लिफेरोप्लास्ट है ये ग्रीक वर्ड से ली गई है. ब्लिफेरोन का मतलब होता है आईलिड, जैसे आईलैशेस होते हैं, एंड प्लास्टोज का मतलब होता है मोल्डेड. सो ऐसे सेल्स विच आर लोकेटेड नियर द बेस ऑफ फ्लैजेलम और सीलिया. तो सीलिया और फ्लैजेला के बेस में प्रेजेंट होते हैं, and they forms these motile appendages that helps in locomotion. So blepharoplast contains basal body which serves as organizing center for flagellum or cilia.
और ये जो ब्लेफेरोप्लास्ट होते हैं दे प्लेस क्रिटिकल रोल इन बायोजेन. The next question is, bacteria having flagella uniformly distributed all over the body are termed as. ऐसे बैक्टीरिया जिनके पूरे के पूरे सेल सरफेस पे फ्लैजेला होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? Our options are Atrichus, Monotrichus, Lophotrichus or Peritrichus. So the correct answer of this question is Peritrichus. Here trichus word means hair or flagella-like structure, filament-like structure. So we have different types of bacteria on the basis of flagellation pattern. Like we have Atrichus bacteria. Atrichus means, A means without, trichus means hair-like appendages. ऐसे बैक्टीरिया जिनमें कोई भी flagella present नहीं होता है उन्हें कहा जाता है Atrichus. Next is Monotrichus. Mono means single, trichus means hair-like structure having single flagella. Then Lophotrichus having a bunch of flagella at one end. Then Amphitrichus means having we can say Amphilophotrichus. This is the right term which is used for this bacteria. Amphilophotrichus means having a bunch of flagella at both ends. If we talk about Amphitrichus, Amphitrichus means bacteria having single flagella at both ends. Then next comes the Peritrichus form. Peritrichus means bacteria having flagellation on all over the body surface or all over the cell surfaces. These type of bacteria are known as Peritrichus bacteria. So Monotrichus, we have example. Monotrichus having single flagella, like we have Vibrio cholerae. Then next is Lophotrichus having bunch or cluster of flagella, that is Pseudomonas aeruginosa. Then we have Amphitrichus bacteria जिसमें कि single flagellum each end पे होता है, that is Spirillum volutens. Then Peritrichus means having bacteria distributed all over the entire body cell surface, so that is E. coli, Escherichia coli. So these are some examples of these bacteria on the basis of flagellation pattern. Next we have different types of bacteria on the basis of its shape, like we have cocci. Coccus means spherical, having spherical shape. Then Vibrio means having comma shaped bacteria. Bacillus means rod-like bacteria. Spirochete means spiral, and Spila again spiral shape. So this next question is, causal organism of crown gall of apple is. So basically crown gall is a tumor-like outgrowth. तो जो एप्पल के प्लांट में इस ट्यूमर की तरह आउटग्रोथ होती है, दैट इज कॉज्ड बाय विच ऑर्गेनिज्म? आवर ऑप्शंस आर एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, राइजोबियम राइजोजीन्स, ज़ैंथोमोनास सिट्राई और अर्वीनिया अमाइलोवोरा. सो इट्स करेक्ट आंसर इज एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस. बेसिकली ये जो बैक्टीरिया है, दिस इज अ ग्राम नेगेटिव सॉइल बैक्टीरिया जो इन्फेक्ट करता है प्लांट पार्ट्स को और कॉज करता है दिस डिजीज विच इज़ नॉन एज क्राउन गॉल डिजीज़. इस बैक्टीरिया को नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर भी कहा जाता है, जो कि मोस्टली रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज़ किया जाता है टू इंसर्ट डीएनए इन द प्लांट सेल. तो इसे यूज़ किया जाता है. सो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस इज सॉइल बैक्टीरियम दैट हैज़ एबिलिटी टू इन्फेक्ट प्लांट सेल्स एंड ट्रांसफर डिफाइंड सीक्वेंसेज ऑफ डीएनए, जिसे कहा जाता है टीआई प्लाज्मिड, दैट इज ट्रांसफर डीएनए टू द प्लांट सेल बाय इन्फेक्शन एंड कॉजेटिव एजेंट्स ऑफ क्राउन गॉल डिजीज़. तो ये डिजीज़ कॉज करता है. और इसमें एक प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है, उसे कहा जाता है टीआई प्लाज्मिड, दैट इज ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड. और उसमें जो सीक्वेंसेस और उसका जो साइज होता है दैट इज 140 to 235 किलो बेसिस. सो जेनेटिक इंजीनियर इसे कहा जाता है नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर, जो बेसिकली हम किसी भी डिजायर्ड फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए को इस टीआई प्लाज्मिड में इंसर्ट करके जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसे हम बनाते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए, एंड दिस रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इनसाइड द प्लांट सेल, और हम प्लांट्स में वो डिजायर्ड कैरेक्टर ऑब्टेन कर सकते हैं. सो दैट्स व्हाई दिस बैक्टीरियम इज आल्सो नोन एज नेचुरल प्लांट जेनेटिक इंजीनियर. And this is the TI plasmid, which contains different regions, like it contains virulence region, that is the region which contains genes for virulence. Then it contains two border sequences which are known as left border, right borders. In addition to this, it contains the genes for oxygen synthesis, cytokinin synthesis, and opine synthesis. Opines are basically the food of this bacteria, which is inside by the plants for this bacteria, and oxygen and cytokinin are the hormones which are responsible for this tumor-like growth. And this is the gene, these are the genes which are responsible for opine catabolism. Then it contains ori, which is important character of a plasmid, that is origin of replication. The next option is rhizobium rhizogenes. So basically जो ये बैक्टीरिया है, it is again a gram negative soil bacterium. ये cause करता है hairy root disease.
जो प्लांट में बहुत सारी हेयर लाइक रूट्स प्रोड्यूस होती हैं, दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय दिस बैक्टीरियम, इसके इन्फेक्शन से वो प्रोड्यूस होती हैं. सो दिस डिजीज और डिजीज इज नॉन एज टर्म्ड एज हेयरी रूट डिजीज. तो ये कॉज करता है. राइजोबियम राइजोजीन्स, पहले इसे कहा जाता था एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स. इट इज अ ग्राम नेगेटिव सॉल बैक्टीरियम दैट प्रोड्यूसेस हेयरी रूट डिजीज इन डाइकोटिलेडनस प्लांट. तो डाइकोटिलेडनस प्लांट में ये हेयरी रूट डिजीज कॉज करता है. द next option is Xanthomonas citrui. So it is known to cause citrus canker. तो ये कॉज करता है डिजीज जिसे कहते हैं सिट्रस कैंकर, जो भी सिट्रस फ्रूट्स हैं. दिस इज अगेन अ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम, रॉड शेप बैक्टीरिया होता है एंड इट इज हार्मलेस टू ह्यूमन, और ये डिजीज कॉज करता है सिट्रस कैंकर. Then the last one is Erwinia amylovora. It causes a disease which is known as fire blight of apple or peach. जो भी रोजेसी के मेंबर हैं, फायर ब्लाइट डिजीज कॉज करता है. ऐसा लगता है कि जैसे जो प्लांट पार्ट्स हैं और फ्रूट्स हैं दे आर बर्नड, मीन्स बर्निंग सिम्टम्स अपीयर होते हैं ड्यू टू द इन्फेक्शन ऑफ दिस पैरासाइट दैट इज अर्वीनिया अमाइलोवोरा. सो फायर ब्लाइट डिजीज विच इज ऑल्सो written fire blight is a contagious disease affecting apple, pear and some other members of family Rosaceae के members को infect करता है and is a serious concern to apple and pear producers जब conditions normal होती है. Next question is which of the following viruses has caused many deaths around the world as an emergent virus? So this was the question which was asked from this recent scenario. Firstly, this is the diagram of this coronavirus which contains different particles, like we have this nucleic acid protein, structural protein, then spike proteins, envelope protein, membrane protein. So our options which are given in this question are SARS, SARS, then H1N1, then OC43 and HKUI. So its right answer is this SARS, that is severe acute respiratory syndrome. Basically जो SARS है that stands for severe acute respiratory syndrome. ये एक viral respiratory illness होती है. It was identified in 2002 in the Guangdong province of southern China. और ये जो virus है that is responsible for the SARS coronavirus called SARS-CoV. और this virus is highly contagious and can spread through respiratory droplets when infected person coughs or sneezes. Or this virus is responsible for millions of deaths around the world. The next option was this H1N1. Basically, it is the virus which causes swine flu. Swine flu जो cause करता है वो virus है H1N1, और इसे हम एक टाइप है ये इन्फ्लुएंजा वायरस का, that can cause respiratory illness in humans. Humans में disease cause कर सकता है. इसे कहा जाता है swine flu virus, जो swine flu cause करता है. And this H1N1 influenza virus was responsible for pandemic in 2009 that spread to several countries around the world. But अब आजकल हमारे पास इसके लिए vaccines हैं, proper vaccination, and its symptoms include the flu-like symptoms like fever, cough, sore throat, body ache, headache, chills, and fatigue. तो ये इसके symptoms हैं. The next options are OC43 and HKUI. So ये जो दोनों ही options हैं, these are basically the types of coronaviruses. 7 human coronaviruses हैं. कुछ एक ऐसे coronaviruses जो कि severe disease cause नहीं करते हैं, मीन्स सिंपल जो common cold है तो उसे cause करते हैं. तो उसी में आता है ये OC43 and HKU. ये दो कैटेगरीज coronaviruses की हैं जो सिंपल common cold की तरह disease cause करता है and it is endemic, means restricted to a particular region. जबकि जो इसकी severe forms है coronavirus की, these are SARS, MERS and SARS-CoV-2 जो कि this was all about for our today's discussion about this questionnaire. I have covered 5 questions in this presentation and I hope you will get some idea from this presentation. If you have any questions, queries and any suggestions, you can give it in comment section. Thanks for watching. Have a great day.